How come? काढा ना तिथे. You do it. Which one is that? Which one? मी नेहमी वापरतो बेटे. Just hold on. Just cut it. First one, second one, third one. Which one? Third one, last one. Soda. हाँ, टाकलं. Now are you able to hear? लोग 2 मिनट में ऑनलाइन वाले हैं. हाँ, I'm able to hear. Yes. If any issues arise, just adjust this one. What one? This one. It's faulty. Hello. Can somebody speak, please? ऐसा आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, ठीक है, आवाज आ रही है. माझा आवाज येतोय देवनाथ सर? यस सर. Yes. Now we are going to the live. Huh? Good evening, ladies and gentlemen. We absolutely believe in the power of innovative entrepreneurship on every level. That's why we are exploring ways to improve our education wing by making it as effective as possible. I, Priyanka, on behalf of Federation of Indian Industry and Professionals, welcome you all to the leading NavUrja wing to educate and make aware mankind in the country and globe. Here are some house rules for you. Keep your phone in silent mode. Rename yourself with mobile number. Put your queries in the chat box. Keep your notepad and pen ready. Note down all the relevant points for discussion. Also, for your information, a recorded version of webinar will be available on YouTube and Facebook. Thank you. Now, it is time to learn the fundamentals of the Federation of Indian Industry and Professionals. Unite together, succeed together. The Federation of Indian Industry and Professionals is a unique, multi-stakeholder organization of visionary industrialists, businessmen, and professionals who share a commitment in shaping the future of industry and society at large. The Federation of Indian Industry and Professionals is a not-for-profit organization. FIIP was established on the 1st of October 2020, with the objective of boosting a small and medium business movement across the country, and becoming the voice of India's various business sectors. It serves its members, and the whole society, through the private and public corporate sectors within the country. FIIP is a lifeline for new startups, small and medium business leaders. It is a crucial platform for networking and collaboration for each stakeholder, who is working for the nation-building cause, and to build Atmanirbhar Bharat. FIIP is actively engaged in the welfare of business community and general society. It encourages debate and organizes engagement programs with policymakers, Indian private and public corporate sectors, multinational companies, regional chambers of commerce, industrial associations and professional associations in each state of the country. FIIP has created a cluster network of 40,000 plus GST practitioners and made available a platform for networking and consensus building within and across sectors, and is the best platform for Indian industry, policymakers and the international business community. Vision: to facilitate and boost entrepreneurship and entrepreneurial development in the country, to support socio-eco development leaders throughout the nation.
to encourage women power in various fields to make Atmanirbhar Nari. Mission: creating a world-class talent body of 5 lakh influential and powerful industrialists, entrepreneurs, businessmen, women, and professionals through FIIP platform within 10 years. DNA: sustainable growth, empowerment and creation. Purpose: helping business people, supporting economic development. Creating industrial insights, inculcating industrial development. Facilitating forums for professionals, solving problems with the right solutions. Enhancing skills among business owners, and creating a common platform for building interpersonal relationships. Support for micro, small, and medium enterprises businesses, formulating applied strategies to meet challenges of various industries. Making society aware of social, health and environmental issues. FIIP has various business platforms such as Network, Industrial Insights, Katta, Spot, Digital, Womenpreneur and NavUrja. These platforms facilitate to make our country Atmanirbhar Bharat in the field of socio-eco-environment, education, social and life. Now, it is time to proceed for our today's NavUrja program. FIIP has observed the gap in the areas of social life, personal life, health perspective, environment and lacunas of women values, which needed to be addressed independently by various awakening programs and practical applications to eradicate unwanted elements affecting, as I mentioned. FIIP has the pool of talent and versatile experts from each domain to do justice these issues and lead society towards quality, health and harmony. With this thought, we have extended as a harbinger through NavUrja, where FIIP is going to address the issues through series of programs providing practical and workable solutions for mankind in the country and globe. The NavUrja is mainly focused on life and social, health, and environment. Each area will be included with several topics and webinars. For example, life and social will have topics like child education and parenting, childhood obesity, gender inequality and many more such topics. Health will have topics like monsoon health, Ayurveda and lifestyle, diabetes, a bitter truth and so many such other topics which will be very, very important. Environment will have topics like green energy, energy conservation, rainwater harvesting and many more like these topics. With this brief about NavUrja wing, now I request our program coordinator to take over introducing today's topic and the speaker. Thank you. Thank you, Priyanka. Good evening, everyone. दोस्तों, मैं नवनाथ देवकर, फाउंडर फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स, आप सब लोगों का सीरीज ऑफ NavUrja 09 में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि करियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम सब लोगों की जिंदगी का। एक बार हम लोग पढ़ाई करने के बाद जब इंडस्ट्री में आते हैं तो सबसे पहला जो पैर आगे बढ़ता है वो पड़ता है करियर की ओर। मुझे लाइफ में क्या बनना है। पिछले 20 साल पहले अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा एजुकेशन होने के बाद इसके ऊपर हम लोग सोचते थे, लेकिन दोस्तों आज जमाना बदल गया है। आज हमें बच्चा जन्म कर लेने के बाद ही पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चों को क्या बनाना है। कंपटीशन की दुनिया है, करियर के बारे में सोचना तो जरूर चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या राइट टाइम है, हमारे बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ पे है, हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसके हिसाब से करियर हम लोगों को चूज करना चाहिए। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। सो चलिए आज इसी टॉपिक को लेके हम लोग आए हैं, करियर डेवलपमेंट गाइडेंस। करियर डेवलपमेंट के लिए एक मार्गदर्शन करना, एक मोटो लेके आज हम लोगों ने यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है डॉक्टर चेतन नेमाडे सर, वो एक प्रोफेसर है एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी से, उनको हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करना चाहूंगा। डॉक्टर चेतन नेमाडे सर 29 ईयर से ज्यादा एकेडमिक एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में उन्होंने काम किया है। काफी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। He did his PhD in cryptography from the IIT Kanpur through the CSIR fellowship after his MSc in the mathematics.
He has taught maths, stats, OR, QT, OT, ETC and PhD, MTech, MBA, MCA, MSc, nursing, MBBS, pharmacy, एक्सेट्रा कोर्सेज के ऊपर उन्होंने उनका योगदान दिया है। वो अभी अलग अलग प्राइवेट क्लासेस लेके नीडी स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रहे हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं, कुछ पेड गाइडेंस देते हैं, लेकिन ये सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। वो प्रोफेसर वर्ग के काम कर रहे हैं और डीन करके ही उन्होंने रेवनेट इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। इसके साथ साथ में वो पीएचडी, एमफिल एंड एमटेक स्टूडेंट्स के लिए भी गाइड करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स एंड थीसिस वर्किंग करने के लिए। इसके साथ में उन्होंने सीडैक और एमपीएस डेवलपमेंट में क्रिप्टो के लिए काम किया है। इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी वो उनके सर्विसेज देते हैं। He has also worked as a registrar and acting as a VC at the PKU MB. So, my dear friends, एक एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने 30 साल से ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन दिया है। ऐसे स्पीकर्स आज हम लोगों को मिले हैं, तो हम सब लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सही गाइडेंस हम लोगों को मिले, और वो गाइडेंस डॉक्टर चेतन सर के पास से हम लोगों को मिलने वाला है। So, Dr. Chetan sir, come on to the board and welcome to the NavUrja sessions. And over to you, sir. Dr. Chetan Nemade sir, please. Please unmute yourself and start your video. Is any challenge at your end, sir? Suddenly something which never happens is happening today. My Wi-Fi is not getting connected to the broadband. Okay. So never it happens. I mean, this is the first time it is happening. No problem, sir. Please start and over to you, sir. Okay. So I am Dr. Chetan Nemade. Today I will be delivering a talk on career guidance. So I'll share my screen. Yeah, please. And are you able to see my screen? Yes. Okay. So sorry, this is not the one I wanted to open, because this takes a lot of memory. PDF is better. My computer is also a bit slow, so see, it takes a lot of time, but once it begins, there won't be any hurry. See, this is ODP format. Can you see a white blank screen? No, sir, no. Well, you are not able to see this NavUrja. No. Please share the screen, your screen, sir. I had already shared. No. Oh. I had already shared. Just a minute, On your screen, at the bottom side of the Zoom application, there is the green button. Share the screen. I know I had shared it, but I don't know why it did not get. I had clicked it. Share and select the presentation, sir. Are you able to see my screen? That's what I am asking. No? Multiple participants can share simultaneously. Advanced sharing option. One participant can share at a time. One participant can share at a time option. Yeah. Okay.
Webinar is now. Please tell me when you see my screen. Yes, sir. Yes. I'll close all other applications. That will make my. No, still not able to. No, no, no. Yeah, yes. No. You want to share? Okay, okay, okay. Share. Yes. Okay. Can you see my screen now? Yes. Your screen is shareable, but your entire screen is shared, sir. You select the PPT, click on the PPT which you want to present, sir. I'll prefer the PDF. That's Yeah. you can take. My laptop is a bit slow. Yeah, can you see my screen? Yes, yes, yes. Yes. Please put your PPT in the presentation mode, sir. Okay. Where is that option? Where is that option? Where is that option? Here. Oh. I'm missing that option. I don't know whether there are changes in Oh, this. this is being PDF is unable to do that. You having the PPT? PPT will take too long. Sir, slideshow. Click on slideshow. I'm not getting that option of slide, so I No, know no, it goes this with is a with PDF file, I slides. suppose. This is a But PDF file. still you can. Yes, I know you can. Last time I had done it using the slideshow option. No, what is besides that actually? Give me the remote, sir. Please approve it. Okay, approved. Okay. I approved it. Actually, माझा लॅपटॉप झालाय खूप जुना आता. It's on the verge of changing. Are you sharing, sir, this one, or is it from my side? Your side, your side. Okay. And it is still not okay. I'll right click and check it. Fit. Select the option fit to this thing. 100% चे. It's 100%. Click on the 100%. You get the options. Sir. It is 100%. Fit. No. Fit Choose page. the fit the page. First one option. Yeah. Okay. Now you start it. Okay, so I am Dr. Chetan Nemade, and I'll be delivering a talk today on career development guidance. Why this is not going to next? The control is on your side or my side? Both sides, sir. Both sides. Okay. So I want the next slide. Okay, maybe I'll control from your side. There is a forward arrow besides slide numbers. Yeah. It's not working. Okay. I tried this one, but somehow it got disturbed. No, sir. Can you operate? Yes.
Why am I not able to operate? But this is surprising. No, it's okay. Let him try. Probably these actually these PPTs are very heavy, mm, one MB each. No, So no my issue. laptop is unable to. Sir, stop the sharing. Uh, I will share from Stop my side. sharing. Yes, stop sharing. Yeah. Last time I did it on Mac, so we had no problem. It was a very efficient system. Just give me a second. My laptop is behaving randomly today. It's behaving randomly today. Some errors in your PPT, sir. Just you start your introduction. Nemade, sir. Huh, Start your introductions huh. for the topics. So this is Zoom or but there is a lot of problem on my. I'm rarely upset. I'm Dr. Chetan Nemade. Uh, my network is unstable today this side. I've been in academics for more than 30 years, and I have done my PhD from IIT Kanpur in cryptography. Thereafter, I have worked in industry and various other places, including lovely professional university, SIDAC, then Galgotia University, and yeah, the previous slides. Is this from your side, sir? This is my side. Okay, okay. So next slide. Uh, I think these are the instructions for the audience, but it's more applicable to me today. Right? Keep your phone in silent yourself with mobile number and so on. Uh, there is there is one slide giving my introduction. It's not in this slide. Uh, anyway, I'll brief in short. Yes, sir. I'll brief myself in short. Yes, sir. No problem. And therefore, okay. So I have been into industry and academics since more than 30 years. And currently, I am a professor in SRGI College of Engineering. I also give consultancy to the IoT projects in the industry, and I give consultancy to the universities for conducting the workshop on latest technologies.
So recently I have given one on web development with the help of my team members. So today I'll be talking about career development, guidance. Generally, when it comes to career, broadly, it is we term it as sufficient earning. We talk career in terms of earning. It can be through education, it can be through business, it can be through some profession, it can be through some services, job, or it can be a designation. But ultimately, we are seeking for a sufficient earning and its continuity to the next generation. So, some of the people they go for even other kind of methods like dishonesty, bribery, and cleverness, while some prefer to be honest, hard working. They believe more on the intelligence. The focus of this is majorly the luxury and the debauchery. डिबॉचरी यानी उन्माद. हिंदी में अगर डिबॉचरी को शब्द देखा जाए तो उन्माद. तो लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद, ये तीन प्रकार के उन्माद लगभग रहते हैं. और अच्छा करियर मतलब क्या, जितना ये उन्माद ज्यादा कर पाएंगे आप उतना आपका करियर अच्छा. एक मोटा मोटी 90% ऑफ द पीपल बिलीव दैट, rather than sufficiency of your physical needs, and what human needs more is relationship with others. So people generally would like to discuss about what already they have in the mind. I will of course talk about it. I will of course give you a guidance about the career guidance uh, with respect to what people had. But before that, I just wanted to tell some few my opinion. Uh, can you get on to the next slide, sir? Do I have a control on this slide? No. Yes, you can. Please select the remote option, sir. Take a remote from my side. Below security participants, no, there is no remote option. No, no. There is the green screen. Where is the? Yes. It shows. It says it's your screen. It's my View screen, options. but you can the remote from my screen. You can take a remote of my screen, sir. No problem. But I cannot see the option. How do I take on customer live stream? You continue it. I will help you for the. Okay. 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 Slide presentation. So just see, observe what is the scenario. Generally, we focus more on education and career. Career means generally education comes first, and then a job or a business or a profession. That is the sequence we go through. Now just observe what is happening nowadays. After spending a minimum of 25 lakhs on the education of a son for about 25 years, I can't see this spot. I can't see this. There is a black spot on this types of slide. Anyway. So after spending a minimum of 25 lakhs on the education of a son or a daughter for 25 years, about 25 years, one gets a blank degree, not a skill for jobs or business, nor the ability
to live in relationship with the others. You can observe this. Everybody can see this. I have written it in Hindi also. बेटे बेटिया की शिक्षा पर 25 साल में न्यूनतम 25 लाख खर्च करने के बाद पूरी डिग्री मिलती है, न कि नौकरी या व्यवसाय हेतु स्किल्स कौशल्य एवं न ही संबंध पूर्वक जीने की योग्यता. Modern education has made man clever and arrogant instead of simple and intelligent. आधुनिक शिक्षा ने मनुष्य को सरल व समझदार की बजाय चालाक व अहंकारी बनाया है. ये हम देख सकते हैं. In the last 25 years, education increased in the society and divorces also increased. ये हाल है समाज का कि पिछले 25 साल में समाज में पढ़ाई बढ़ी एवं तलाक भी बढ़े. जो हम करियर इतना करते हैं, इतना एजुकेशन लेते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, एक हल्का सा कॉन्सिक्वेंस मैंने बता दिया. ऐसे बहुत सारे हैं. आई हैव जस्ट पॉइंटेड आउट फ्यू, मे बी वन और टू इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो. You can make a note of this. Next slide, sir. Okay, this is one more consequences that marriages means to bear with discretion. एक दूसरे को झेलना और विवेकपूर्व वहन करना मतलब झेलना. So this is the general output of ultimately the career that we go after. Next slide. Okay. That was regarding the education. What I told was the consequence of education. Let us see when we do business nowadays, what are the consequences of the businesses that we do and whether we like those consequences or not. See, after the money comes, the partnership breaks and so does the family. पैसा आने के बाद पार्टनरशिप टूट जाती है और परिवार भी टूटता है. ये हम देख सकते हैं कि परिवार में ऐसा होता है कि नहीं होता है. Everyone needs to understand. So what are we missing? Everyone needs to, what are we missing in our career thoughts? Everyone needs to understand conscious for a successful career. But unfortunately, all the educational, social, religious, political institutes of the country are silent on this conscience. In Hindi, सफल आजीविका के लिए विवेक, आजीविका मतलब करियर. सफल आजीविका के लिए विवेक को समझना सबकी जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से देश के सभी शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थान विवेक पर मौन है और हम इसी दिशा में इनको गाइड करते हैं. Without conscious in the business, we work under one roof, but do not work. We actually don't work. We actually suffer. विवेक बिना व्यवसाय में हम एक छत के नीचे केवल काम तो जरूर करते हैं, लेकिन हम काम कम करते हैं और एक दूसरे को झेलते ज्यादा है. तो ऐसी चीज ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए. ये इस विषय पर बाद में कभी बात की जा सकती है कि हाउ टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड बी अवेयर अबाउट कॉन्शियसनेस. मैं जो रूटीन बात चलती है वही बताऊंगा, बट विथ दिस वार्निंग दैट all those things need to be done keeping in mind these consequences that we have landed up with. Next slide, sir. So what do we lose here? I am trying to figure it out in a very short time.
that counseling of wisdom cannot be neglected in career counseling. ये हमारे काउंसलिंग में मिसिंग है. करियर काउंसलिंग में विवेकता का परामर्श अनिवार्य है, जो कि हम नहीं देते हैं. तो ये काउंसलिंग विजडम की कैसी होगी, दैट्स अगेन अ वेरी सेपरेट टॉपिक. पर किन किन चीज़ों में होनी चाहिए, इस पर ज़रूर हम बात करेंगे. जो रूटीन हमारे रूटीन हमारे जो इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में मैं थोड़ी उसको मैं थोड़ा रिकॉल करूँगा. नेक्स्ट स्लाइड सर. दिस इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. से ये जो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने ऊपर के बताए ना, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रियलाइज्ड इट कि ऐसा हो रहा है. हम चांद भर तो जा रहे हैं, लेकिन अपनों से दूर होते जा रहे हैं. एंड मैनी मोर सच कॉन्सिक्वेंसेस. So the government felt that the educational system should be reformed immediately, so that the next generation gets better. So they designed a new education policy. The main reason behind new education policy is this observation of the government. And there is a Supreme Court order also in 2013 that you please reform your education immediately. अब इन्होंने क्या किया है, जहाँ तक कि मैंने इसका अभ्यास किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, they have changed the structure or the pattern. But in my opinion, there is no change in policy. पैटर्न चेंज करना मतलब पॉलिसी चेंज नहीं करना, मेरे हिसाब से. So what they have done, we used to have 10+2 previously. Now we are going to have 2023 onwards 5+3+3+4 pattern. That is equivalent to the 10+2 pattern. In this first 5 years, that the entry will be from the Anganwadi preschool, 3 years. So for the first 3 years, बच्चा कुछ नहीं करेगा, बस खेलेगा वहां पर. Nothing, no studies, nothing. He is going to just enjoy. And then another 2 years he will start some primary schooling, and then he is going to start his primary schooling for 3 years, and then another 3 years is you can compare for middle school. And in the last 4 years, he is going to focus on some specific subjects of his interest without any restriction. See, there is a difference. There is a difference in the new policy, these 4 years, and the old policy. After 10, we were given directly either science or arts or commerce or pharmacy or diploma or ITI. These kind of options we were given. And once he goes into that stream is fixed. And up to 10, even if he feels mathematics is difficult, he had to do mathematics. But here it's not going to be so. In the last 4 years, he will have options. If he doesn't like mathematics,
He can skip mathematics. If he likes biology, he can take biology. And if he likes, apart from biology, chemistry, he can take chemistry also. So that's the difference. And if with chemistry he wants accounting, he can take accounting. That option was missing in this 10+2. So that's the major change in the policy. Also, uh, further also there is no restriction on subject to be taken. After this 5 plus 3 plus 3 plus 4, if you complete 1 year, you will get the certification in the subjects that you have chosen. Suppose I have chosen pharmacy subjects. I'll get a certification of pharmacy after 1 year. If I continue with the same subjects for the 2 years, I'll get a diploma in the said subject. Then after 3 years, I get something equivalent to a degree in that subject. See, what is the major difference? Along with this major subject, I have the option to choose other subjects. Suppose I'm taking a degree in mathematics. Then along with mathematics, I can take history. I can learn history yet take a degree in mathematics. Of course, mathematics will be my main subject, but there won't be a compulsion that I have to take those physics and statistics or something like that. So government is optimistic that these skills are going to generate, make them more fit for jobs. वो तो आने वाला समय ही बताएगा whether this will work or not. And after 4 years, you can do specialization. This will be fourth year. 4 year will be the degree will be given after 4 years. Sorry, I wrote it after 3 years. No, it will be 4 years. 4 years. After 4 years, you get a degree. Not 3 years. Now we get a degree in 3 years. Some of the degrees like BA, BSc, BCom, BCA, BBA, we get in three years. We won't get this degree in 3 years. We will get that degree in 4 years now. And what is the advantage? The advantage is I can take other subjects along with my special subject. They have removed MPhil degree. Yeah, and you can continue with PhD after completion of these 4 years. And even your post graduation. So I hope it's clear what is the difference between the 10+2 pattern and 4 plus 3 plus 3 plus 4 pattern. This is the new education policy. And people are yet to understand it. Universities have started designing their courses accordingly. But I have seen very few universities coming up with the syllabus for the new education policy implementation. Delhi University is one of them. So other people will, it will take some time to set up. So right now, I just cannot give you a guidance on this new education policy based on new education policy, because even the universities have not fixed their syllabus as yet. So I'll tell you whatever old things we were doing, the same things will be done, but in a new manner with little change. So I'll give you a bit introduction to those
What next? There is a slide. What next? I'll tell you there. Next slide, sir. Are you able to operate the slide, sir? No, I am not able to operate it. Please click on the screen. You can control FIP. It says. Is it possible right now? No, you can control FIP. It says you can control FIP. It's But not. Next slide, sir, please. so this old pattern. What is that? Pre-NIP. Yes, pre-NEP. What next after 10? Intermediate was for 2 years. Polytechnic was for 3 years. ITI was for 2 years. Paramedical was for 3 years. And short-term courses were for 6 months or 1 year. We won't require this specialization after 10th anymore. Directly you will get 12th degree, no 10th required. And they were planning to remove that board exam for 10th and 12th, but at present they are continuing with the 10th board and 12th board, even though according to the new education policy there is no 10th or 12th. It is 5 plus 3 plus 3 plus 4. At most there should have been one exam at the last. But I think they are going to take the 10th exam also, because you cannot change things immediately in 1 year. So gradually they will remove it. They will first implement 5 plus 3 plus 3 plus 4, keep those 10th and 12th exam as they are, and gradually in a couple of years or so they will remove that 10th exam. But 12th exam is inevitable. The last exam in the 4th year is inevitable. And even the exam patterns have also changed. I think it will go like the semester pattern. After every 6 months, you will have exam. Now, if you observe this policy, just take a break. Just observe this policy. Recall the consequences I had listed at the beginning of the slide lecture. Do you think this change in pattern will bring the change in those consequences? I don't think. I don't think they have definitely made a remark that you change your change your purpose of education, bring value education into it. That's what one of the suggestion was. Bring value education into it. But value education has not been incorporated as yet. They are uh, they are attempting. Some universities have already attempted it recently. I think today itself there was the first meeting at Bhopal. They are introducing value education courses in Madhya Pradesh. So today onwards they started meetings for the teachers. So first they will train the teachers, and then the teachers will train the students. Now observe, even if it works, let us take let's be optimistic. Even if it works, how much time will it take for the teacher to learn? First of all, the teacher will not learn the values, because the teacher has already fixed the values in his mind. Whatever kind of businessman the educational system had to produce, it has already produced. It's now difficult to change their mentality.
You cannot change them, but you can at least stop them from uh, propagating that mentality to the next generation. So this will reach the students. Let's say this reaches the students properly, and that will take about 10 years, uh, at least 5 years, and then those students will you will see it in the behavior of the students, and that will take another 20 years at least 20 years. In my, as much as I calculate, it will take at least 20 years. So that is even if it happens in 20 years, 20 साल में भी हुआ तो बहुत सस्ते में निपट गए हम। 20 साल में अगर आपकी जनरेशन सुधर रही है तो बहुत सस्ते में निपट गए हम। एक 100 साल में भी अगर जनरेशन सुधर जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट स्लाइड सर। I cannot actually see. So what next? These are the old. This is the old slide. The old slide means old. This is the guidance based on old pattern. So what you can expect now? Remove these 4 year, 3 year duration. Duration को आप neglect कर सकते हैं. You neglect the duration and you concentrate on these topics like MBBS, BUMS, aeronautical engineering, physics, chemistry, all these one in the greens, these center ones in the blue, the left greens, this orange, then the bottom lines. These are all these are the major branches in which you can shift. So after this 3 plus 5 plus 3 plus 3 plus 4, you can take the courses in these, and not only that, you can take these courses in the last 2 years, or last 4 years rather, last four, that 5 plus 3 plus 3 plus 4, in that 4 you can take all these kind of subjects. अभी अभी नहीं है ये subjects, अभी बनाने पड़ेंगे. The boards, national boards, and board C, 5 plus 3 plus 3 plus 4 will come under boards. So board will have to design these subjects. Then and only then, after 1 year, he will be able to get some specialization. So I don't know whether you people are following or not. I am generally used to an interactive session. So these are the subjects that which will be the option. You can I'll keep this slide for some time. You can go through those. I have full, I think 15 or 20 pages PDF file. ऐसे subjects की पूरी list की list है. So no, this slide. Okay. Can you go back to the previous slide, please? The previous slide, which I was keeping for some time for people to read. Anyway, let it be. Now, apart, ये तो क्या हुआ? I had not finished with that slide, sir. I had not finished with that previous slide.
सर पिछले साइड पे जाना है. I have not finished. Yeah, this one. So just go through this LLB, BA, LLB, BCom, BA, and so on. There are so many options. On each of these options, I have one such PPT. I have attached it separately. I'll share it with you people. Like say here is mathematics, BSc mathematics. So what after mathematics? What after BSc mathematics? What all options do you have? You can either go into teaching the lower classes. I'm taking one example of mathematics. Of this 100 options here in front of me, I have BCom, I have BBA, I have silk technology, I have civil engineering, then I have MBBS, I have all kind of options here. I'm taking an example of mathematics. So, what after mathematics? After mathematics, I can go for lower class teachings, get a B.Ed degree, Bachelor of Education or D.Ed degree, and I can teach mathematics at the lower classes, or I can go for MSc, clear the net set and go for higher class teaching, or I can go into research. That is the third option I have. I can go into research. In the very first option, again, I had two sub options. I can teach the lower classes, I can teach the middle classes, and I can teach the higher classes up to 12. Uh, so for 12th, I will need a B.Ed along with that BSc degree in mathematics. Then I can go for research, and then I can go for staff selection commission option after mathematics. There are certain jobs in the government sector which need a proficiency in mathematics. For example, that economics, wherever that economics is required, you should be strong in mathematics or statistics. So you can go for those options, and then obviously you can join the combined defense services after mathematics. So like this, uh, we have for each of these subjects, we have a thorough uh, detailed further classification or option rather. That pattern will change a bit. Yes, I'm finished with this slide. Now, uh, apart from the information, in the previous slide, I have just given you the sectors. That's it. These are all the possible sectors in which you can move. Now, these are the things you should be aware, the student should be aware. Uh, people are not even aware that there is a separate institute for crafts and design. So you will have to keep in touch with these kind of advertisements and the options they have. आजकल जो लोग काउंसलिंग करते हैं उस काउंसलिंग में जनरली वो इस तरीके की इंफॉर्मेशन ही देते हैं. But for me, counseling is not limited to just this information. Of course, it's required, and giving information is part of the counseling. But I would rather lay more stress on wisdom, counseling on the wisdom. Once you develop the wisdom, then this information and other things, they are secondary, minor. Anybody can do it. Even the student himself can do it. So this is one of the examples I took. Crafts and design. These are the various programs they offer.
These are the various specialization they offer: hard material design, soft material design, fired material design, fashion clothing design, jewelry design, crafts communication. And you have different 2 years degree, 2 years master's degree. This is master in design, 4 years bachelor in design, and then you have a 3 years hybrid mode, master in vocational studies, and so on. So this is one of the advertisement I have taken. Uh, from the advertisement also you get a lot of information. I'm sure most of the students might not be knowing that there are separate courses for crafts and design. So if they go through, they just read this advertisement, they will just come to know कि oh ऐसा भी कुछ है. Next slide. I have taken few examples. This is National NEST. This is for some special institutions like ICER, then NICER. ICER is different. This is for NICER. Again, many students are not aware. The only thing they are aware is MBBS और इंजीनियरिंग कहाँ से करनी है, तो IIT सबसे बेस्ट माना जाता है, और कुछ गिने चुने नाम उन्होंने सुने रहते हैं, और दे माइट बी अवेयर अबाउट देयर लोकल colleges. Like if you go to Pune, then this Bharati Vidyapeeth, MIT, Maharashtra Institute of Technology, and DY Patil, and then Sinhagad College. So they might be knowing just some of these colleges. And IIT, वो सोचते हैं कि वो तो उधर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे लगते हैं. Either they succeed or fail. If they succeed well, they achieve what they wanted. If they fail, then uh, that's bad for them. But it's not that bad. वो IIT का जो प्रिपरेशन आपने किया है, that will not go waste. You take an entry into some other this special kind of institutes. You can let, जैसे IISc है आगे चल के हायर में, इन आइसर है भुवनेश्वर में, आइसर बहुत जगह निकली है, पुणे में निकले है. देन वी हैव आइसर इन रोपर, एंड वी हैव आइसर in one more. Then we have ISI Calcutta. So these are all the different institutes which are good for the list of subjects I had given. Some of the subjects, for example, this NICER is good for biology, chemistry, mathematics, and physics. That's it. No engineering. If you go into these institutes, you will get a better environment. You will get a better orientation for this biology, chemistry, mathematics, and physics. If you take the product student from these institutes, hopefully he should be better than the product of the university. So like this, for every subject, I have the list where all you can go. I don't think I'll be able to share that in this short period of time. Next slide, sir. Yes, this hotel management catering technology आजकल लड़कों को थोड़ा ज़्यादा पता चलने लगा है. पहले तो बिल्कुल भी पता नहीं था. And they had very good jobs, very good career. You can go, you can establish your own business. You can join some 5-star hotel, and these are the various courses they offer. See, courses covered: domestic and international tourist destinations, itinerary planning, travel documentation, airfare and ticketing, logistics and travel agency and tour operation, business tourism, customer service skills, foreign language, medical tourism. So these are the various courses they offer.
ये थोड़ा अलग नहीं लग रहा है? जो हम रूटीन में पढ़ते हैं उससे थोड़ा अलग है ये, डेफिनेटली यस। एयरफेयर एंड टिकटिंग, ये आप एक टिकट निकाल के देखिए, इट्स सो डिफिकल्ट नाउ डेज, बट किसी एजेंट को दीजिए, वो तुरंत निकाल देता है। तो कुछ तो नॉलेज उसको आपसे ज्यादा है। सो उस पर कोर्सेस है ये, और वो स्पेसिफिक प्रोग्राम में दिए जाते हैं। सो यू कैन, in the new education policy, if the institute offers this kind of options, you can actually take these options. जैसे मेडिकल टूरिज्म लेना है आपको, आप केवल उधर बायोलॉजी लीजिए, बायोलॉजी उसमें बॉटनी जूलॉजी लीजिए, and you need not take physics and chemistry. You can take medical tourism as one of your option, of one of your major subjects or optional subject, जैसे भी चाहो। तो ऐसी और कुछ इंफॉर्मेशन है। अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ स्लाइड्स ऑफ दिस काइंड। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये कुछ these are not the top institutes, but जो ठीक ठाक पैसा जिनके पास है, और जो कुछ बच्चों को देना चाहते हैं, वो इस तरीके की कुछ अलग अलग कोर्सेस निकालते हैं। जैसे यहाँ पे ब्यूटी एंड वेलनेस करके एक कोर्स निकाल दिया। अब ब्यूटी एंड वेलनेस आपको आईआईटी में तो नहीं मिलेगा, आईएसआई में तो नहीं मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी में आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये इंस्टीट्यूट है, इन्होंने सिम्बायोसिस ने ये अपनी तो तरफ से ये एक कोर्स निकाल दिया, ब्यूटी एंड वेलनेस। So you can go for these kind of courses also. And अभी तो new education policy will facilitate these universities to offer lot of such courses, numerous। इसलिए मैंने पहले ही स्लाइड में जैसे लिस्ट कर दिया था सेट ऑफ ऑल कोर्सेज, वैसे एक पूरी एक पीडीएफ की पीडीएफ है मेरे पास। आई जस्ट आई हैव गिवन इट टू शेयर। उसको एक बार केवल एक ग्लांस कर लेंगे लेक्चर खत्म होने के पहले। कैन वी हैव अ ग्लांस एट दैट स्लाइड सर, जस्ट फॉर 2 minutes, नॉट मोर। Yes, sir. You have what next? You have a PDF. What next? I have not a PDF. Okay. So that is nothing but the enhancement of the very first slide I had given. That very first slide contains at the most, say, about 75 or 100 options. Okay. This is one more slide. Yeah. See, right now, this also has to be taken into account कि आपको स्कोप कितना है एडमिशन मिलने का। ठीक है, आपने तो चूज किया कि मुझे वेल्लोर जाना है या आईआईटी में जाना है या एम्स में जाना है। सपोज आई फिक्स माय टारगेट एज एम्स और एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो how many what are the chances that I am going to get admitted? So this is a reservation. 50% are reserved for JEE main. Then of the total 60, 39 seats are reserved through cap. Then 20%, that is 12% seats are reserved for management seats. आजकल ये मैनेजमेंट सीट ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। एक हाथ दो, ये पहले खूब चलता था 80s एंड 90s में, तो खूब डोनेशन लेते थे ये मैनेजमेंट कॉलेजेस। पूरा ये 12 सीट पर ही डेवलप हुए हैं। अभी इनकी जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, ये सारी की सारी ये 12 सीट्स पर बनी हुई है। उस समय वो 2-2, 4-4 लाख डोनेशन लेते थे। अभी तो खैर ये जमाना गया, और 70% will be from the home university and 30% will be from the other universities. And from the home university also 50% will be reserved. That is 14 seats will be reserved.
50% will be general seats. So दिखने में आपको 60 सीट्स दिख रहे हैं, लेकिन आपकी कंपटीशन ये 13 लोगों से है. If you are in general category, then your competition is for these 13 seats and not 60 seats, क्योंकि 60 नहीं है आपके सीट्स. सिमिलरली आप बाहर से कहीं हैं और आप सपोज यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड यू वांट टू टेक एडमिशन इन महाराष्ट्र and you are from general category, then you have only 6 seats. Of the 60 seats that you see, you have only 6 seats. तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको स्टूडेंट को. और करियर, अब मैंने ये एजुकेशन से रिलेटेड करियर पे टॉक दिया. आई थिंक वी हैव far more experts than me who will talk about career in business and profession. So I leave on to them to give the further talks, and that's it. You can go into details, more details about the list of courses and the list of institutes, then their mode of admission. They have different they have different exams. तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए बच्चों के लिए. थैंक यू. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. It was a very fantastic session, sir. आज का सेशन बहुत ही अच्छा सेशन हुआ है. मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दिस इज टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज सामने आके आप पूछिए, अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए. यस सर. Hello, this is Ajish here. Sir, what do you mean by luxury and chevalier, which you mentioned in the first slide? Debauchery. Huh? Debauchery, luxury and debauchery. What does that mean, sir? Debauchery एक उन्माद, मतलब that is not a basic requirement. See, that requirement is guided by outside situations. For example, देखिए आपकी मूल रिक्वायरमेंट भोजन करना है, जो कि आप घर में एक 20 रुपए में भी बना सकते हैं. और आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप किसी अच्छे लॉज में जाकर एक 60 रुपए 80 रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए की एक थाली खा सकते हैं. इसमें आपके बॉडी को आवश्यक वो सारी सुविधा सारी न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं. पर आप उस भोजन को आप प्रेस्टीज से जोड़ देते हैं या एंटरटेनमेंट से जोड़ देते हैं. फिर आप 3 स्टार 5 स्टार होटल में जाते हैं और जो काम आपका ये 100-125 रुपए में हो जाता है, उसके लिए आप 5-5 10-10 15-15 20-20 हजार खर्च करते हैं. एटलीस्ट एक बार आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो 1000 के ऊपर ही बिल आता है एक पर हेड, इफ नॉट मोर, एटलीस्ट 1000. तो ये क्या है? ये क्या आपकी आवश्यकता है क्या? आप अगर देखेंगे, मैं ये हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि मुकेश अंबानी की जो मिसेस है, उसने 27 करोड़ रुपए की साड़ी पहनी थी 10 साल पहले. 10 साल पहले. क्या व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर क्लोथ्स? क्लोथ्स का पर्पस आपको प्रोटेक्शन देना है और एक लज्जा, समाज का एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, वो लज्जा.
आपकी लज्जा बचे रहे, इसके लिए आपको कपड़े पहनने हैं। कि बहुत गर्मी हो रही है, आप सारे कपड़े निकाल के घूमते तो नहीं है ना, थोड़ा कुछ तो कपड़ा डालते ही है। तो ये आपकी आवश्यकता है। लेकिन 27 करोड़ की साड़ी पहनना ये कोई आवश्यकता है क्या? ये तो कोई, सो दैट इज डिबॉचरी। Thank you, sir. Yes, Prasanna Devi ji, please unmute yourself and ask your question. Prasanna ji, आपने hand raised. Sir, am I audible? Yes, sir. You are audible. Okay, sir, first of all, it was a wonderful session, very inspiring, very much informative. We are very much thankful to you, thankful to FFI and Devkar sir as well. Very basic question, sir. How to choose a career after 10th standard? What is the basic criteria? How to choose the career? After 10th standard, yes. Which line to choose? How exactly? I mean, parents are very much. This is a turning point for the students. You have shown very insightful sites, and you have given the insightful information also. But See, how this to is choose का तो सबसे पहले मैंने जवाब दिया है। You first sort out your रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट देखिए आप क्या है पहले। okay. मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे आप क्या रिक्वायरमेंट फिक्स करते हैं कि मुझे बहुत बड़ा पद मिल जाए, और बहुत बड़ा पद मिलने के बाद भी आप घर में सुखी नहीं रहते हैं, आपके अपनों से दूर रहते हैं, तो आप उसको सक्सेसफुल करियर मानेंगे या फेलियर मानेंगे? Okay. तो पहले तो आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आपको फिक्स करना पड़ेगा, और उस ज़रूरत के हिसाब से फिर इतने सारे मैंने ऑप्शंस आपको बताए, उसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए। सर लेकिन अभी आपका, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, आपका IoT का एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा है सर। अभी आज की तारीख में चैट जीपीटी, AI, MI, इतनी सारी चीज़ें ऑप्शन, हमारे टाइम पे इतने ऑप्शन नहीं थे सर। FIIPCOM, BA, हाँ अभी इतने सारे एवेन्यूज, इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए, समझ में नहीं आता कि बच्चों को कौन से इसमें उन्होंने जाना चाहिए या फिर हमने उनको बोलना चाहिए। मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। चेतन सर, एक मिनट में लेता हूँ। प्रसन्ना सर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम लोग जो भी चीज करेंगे सही इंटरेस्ट के साथ करेंगे। जो भी चीज करेंगे सही इंटरेस्ट के साथ में करेंगे और एक्सेलेंस अगर उसके आगे लगाएंगे, तो मेरे हिसाब से दुनिया में जितने भी वर्टिकल्स है, जहाँ भी हम लोग देखते हैं, वहां पे अच्छा करियर बन सकता है। जरूरी है हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, मेरा खुद का इंटरेस्ट क्या है। वो इंटरेस्ट अगर मुझे सही तरह से समझ में आता है तो डेफिनेटली आपको लाइफ टाइम में कि मैंने ये चूज किया, मैंने गलती की, ऐसा सवाल आपके सामने कभी भी नहीं आएगा। और इंटरेस्ट अगर आपको सही तरह से समझना है तो मेजरली 2 टाइप्स के इंटरेस्ट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। एक आता है इनर साइड, एक आता है आउटर साइड। अभी ये इनर साइड इंटरेस्ट और आउटर साइड इंटरेस्ट ये समझने के लिए मुझे लगता है 3-4 घंटे का टाइम लगेगा डिस्कशन के लिए। ये भी एक टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम पे लेके आएंगे। बहुत जरूरी है सर, कि बहुत बार लोगों को ऐसा भी होता है कि यार मेरा इंटरेस्ट क्या है, खुद को ही पता नहीं होता है। बहुत बार ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि ये बोलता है कि यार कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन देखा जाए तो उसका वहां पे इंटरेस्ट ही नहीं होता है। उसका इंटरेस्ट वो उसको खुद को समझता है कि जहाँ पे उसका अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन इज नॉट योर इंटरेस्ट। जो करने से दिल को सुकून मिलता है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोल सकते हैं। जो काम करते समय घंटों टाइम कैसे निकल जाता है वो जब समझ में नहीं आता है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोल सकते हैं।
करेक्ट। पहले हम लोगों को हमारा इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट एक बार आइडेंटिफाई हो गया ना तो सारी चीजें सर इजी होती है। और कुछ तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं नहीं नहीं, देखो सर, इट वाज नाइस इनसाइट हाँ। फ्रॉम यू आल्सो। अभी सर मैं थोड़ा प्रसन्न सर, हाँ नेमड प्रसन्न सर। सर ही बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ सर। हाँ, अब मैं एक थोड़ा सा सवाल पूछता हूँ, लॉजिकल सवाल। सर ने तो गाइडेंस दे दिया सीधा सीधा कि आप अपना इंटरेस्ट देखिए, कि ताकि आपको आगे पछतावा ना करना पड़े। अब मैं एक सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ आपको, आपके पास ऑप्शंस, आपने कहा कि मेरे पास तो अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो गए। अच्छा, ऑप्शंस जब मेरे पास ज़्यादा होते हैं तो मुझे कंफर्टेबल फील होना चाहिए या अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए? मेरे पास दिल्ली जाने के लिए एक ही गाड़ी थी पहले, आज मेरे पास कम से कम 50 गाड़ियां हैं, तो मैं कंफर्टेबल होना चाहिए या अनकंफर्टेबल होना चाहिए? नेमड सर, आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट सर एजुकेशन नहीं, या फिर बट तो करियर। बाद में सुन लेंगे, हम बट तो बाद में सुन लेंगे, लेकिन आप एक सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को भी समझ में आएगा ऐसा सोल्यूशन देखिए कि पहले मेरे पास जाने के लिए एक ही गाड़ी हुआ करती थी, वो भी सुबह 5 बजे, करेक्ट। बड़ी मुश्किल से मुझे पकड़ना पड़ता था दिल्ली के लिए। आज हर आधे घंटे के पास मेरे पास गाड़ी है दिल्ली की, तो मैं कंफ्यूज रहना चाहिए या सुविधा कंफर्टेबल रहना चाहिए? नहीं, कंफर्टेबल रहना चाहिए। एग्जैक्टली, और हो क्या रहा है, कंफ्यूज। हाँ। तो इसका रूट रूट जो कारण है वो सर ने बता दिया कि आप अपना इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी चूज कर लीजिए, ओके। इट वोंट मैटर। राइट। see let me illustrate it with one more example। जैसे MBBS के बाद मेरे पास बहुत ऑप्शंस है। I can go for gynecology, I can go for radiology, I can go for pediatry and I can go for surgery से। ये 4 ऑप्शंस मेरे पास है। मेरा रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि ये चार ऑप्शंस में, चारों के चारों ऑप्शंस मुझे मिल गए, और बाकी लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब कोई रेडियोलॉजी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई गायनाकोलॉजी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई मेडिसिन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे एक भी कोई भी मिल जाए, स्टिल आई एम सक्सेसफुल। अब मान लीजिए मैंने उस हिसाब से, मेरा मेडिसिन में इंटरेस्ट था, मैंने मेडिसिन चूज कर लिया। अब कुछ सालों के बाद, अरे रेडियोलॉजी लेते तो अच्छा होता, does it make any sense? करेक्ट। बस राइट तो सर, ये राइट। सिंपल सा गाइडेंस है, करेक्ट। सिंपल सा गाइडेंस है। क्या नहीं, चूज करेक्ट सर, गॉट इट। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चेतन सर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैं नवनाथ सर से ले लूँगा। आई विल टेक योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हाँ, फ्रॉम नवनाथ सर। 639-265-3746। 639 639-265-3746। ओके। थैंक यू सो मच सर। हाँ, एक स्टूडेंट वेलफेयर ग्रुप करके मैंने निकाला है, उसमें एजुकेशन के बारे में तो कम, लेकिन जॉब के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल एटलीस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई विल शेयर ऑल दोज। ये जो एक स्लाइड दिखाई थी स्टार्टिंग में मैंने, इसमें सारे एक लगभग 100-150 ऑप्शन थे। दैट वाज जस्ट अ पार्ट, एक स्लाइड मैंने उठा के रखी थी। ऐसे पूरे बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हैं, तो उसमें से कोई भी चूज कर लीजिए आप श्योर करियर के सर, लिए। श्योर सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बट मेरा तो फोकस यही रहेगा, मैं कि देख लीजिए कि जो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको लिस्ट कर दिए थे, मेक श्योर दैट यू डोंट लैंड अप इन दोस कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, ओके सर। ग्रेट। और कोई है जो सवाल पूछना चाहेगा? सो चेतन सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा गाइडेंस किया। करियर
चूज करने का पहला जो एजुकेशन पैटर्न्स, एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी इम्प्लीमेंट होने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सो उसके बारे में भी आपने कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया। उसके बाद में हम लोग एजुकेशन तो लेते हैं, एजुकेशन के बाद में हम लोगों को एक्चुअली क्या करना चाहिए, कितने कितने ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस आपने यहाँ पे एक्सप्लोर किए। उसके बाद में एक्चुअली हम लोग करियर में जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके बारे में भी आपने बताया। तो ये करियर जो है लोगों का, तो इसमें हम लोग सालों साल भी बातें करेंगे ना तो टाइम नहीं पुरने वाला है। हमारे पास बहुत सारे लिमिटेशंस है। तो 8:30 हो रहे हैं, सो टाइम इज कंसर्न। सो मेरे हिसाब से आपने जो भी देने की कोशिश की है, इट्स वाज अ वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने जो आज कंट्रीब्यूशन दिया है, वो कंट्रीब्यूशंस हम सब लोगों के डेफिनेटली बेनिफिट में आएगा। इसके बाद में जो यूट्यूब यूजर्स है जो इस वीडियो को देखेंगे, फेसबुक यूजर्स है वो वीडियोस देखेंगे, तो उनको भी कुछ इंसाइट्स मिलेगा यहाँ से डेफिनेटली। सो आपका इसी तरह से गाइडेंस हमारे यूजर्स को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ये मैं हर बार कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पे आए प्लेटफॉर्म के ऊपर और हम लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें। आपके पास जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो अगर सारे लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट सोसाइटी को होने वाला है। सो थैंक यू। और सारे ऑडियंस को जिन्होंने भी आज के सेशंस में पार्टिसिपेट्स किया है, तो सारे पार्टिसिपेंट्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से हमारे वीकली सेशन के साथ कनेक्ट रहिए। आपको एवरी वीक हर एक नया टॉपिक लेके हम लोग आते हैं, उसमें से आप आपका इंटरेस्ट ढूंढिए, वहां से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। एक्सपर्ट से आप है तो एक्सपर्ट के साथ आप कनेक्ट कीजिए। डेफिनेटली आप एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करते हो तो वन स्टेप आप डेफिनेटली आगे जाने के लिए आपको यहाँ से हेल्प होगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो इंडस्ट्री के पीपल्स हो या सोसाइटी के कौन से भी एरिया के पीपल्स हो, उनको एक हेल्प करने की हम लोग यहाँ पे जरूर करते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे इवनिंग 7 बजे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you.